ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है, राइट? 2 डायमेंशनल में कौन से 2 डायमेंशंस पढ़े हैं? X and Y. X and Y. Okay, why do we call it 2 dimensional? Tell me this thing. Because it only has like 2 dimensions. Length and It breadth. has length and breadth. It has length and breadth. Okay. And how can we say a figure is 3 dimensional? When can we say actually? If it's It needs to length, have breadth, height. and height. If it's okay, ठीक है. एक बहुत simple सी definition बताता हूँ. So basically, 1 dimensional figure is like, when do we call a shape as 1 dimensional? It's when you can move in only one particular direction. So if you talk about a line, तो line is either horizontal or vertical. So एक लाइन पे तुम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, या तो वर्टिकल मूव कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो. तो क्योंकि केवल एक डायमेंशन है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज 1 dimensional figure. Talking about a 2 dimensional figure, so when I club a horizontal line and a vertical line, what do I get is, I get 2 different directions. I can move horizontally, I can move vertically, and even I can move diagonally. So that's a mixture. When you move diagonally, it's a mixture of horizontal plus vertical, correct? What about a 3 dimensional figure? So अगर तुम normal paper को, if you consider a normal paper as a 2D plane, right? It's of course a 2D plane. So when you move inside and outside of the paper, we call it that it's the 3rd dimension added to that paper. ठीक है? So अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था x axis, हमने पढ़ा था y axis. अब एक और axis आ गई है, that is the x axis. अब ये बताओ कितनों लोगों को So ये you समझ mean आया कि Z z axis, axis no? is out of the plane? So could you repeat? Okay, so I said we have x-axis, we have y-axis, and the 3rd dimension added, or the 3rd axis added, is the z-axis. Okay, this is in and out of the paper. I have a copy. एक बार कैमरा पे देखना सब लोग. Let's say ये x-axis है, ठीक है? ये वाली y-axis है, and in and out of the paper. So if you talk about, like, this is the z-axis. समझ आ रहा है? In and out of the paper. तो ये जो मैंने 3 dimensional बनाया है ना, अब इसको समझना कि ये पेपर से बाहर आ रहा है, ठीक है? जो प्लेन है उससे बाहर आ रहा है. 2D में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इमेजिन करना आसान. ऑलराइट, सो सब चीजें बिल्कुल सेम है. पहले हम 2D में x, y से कोऑर्डिनेट बनाते थे, लाइक, राइट? कोऑर्डिनेट x, y से लिखते थे. अब इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? x, y, z. ठीक है? पहले डिस्टेंस फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर. अभी कुछ लिखना मत, प्रॉपर आई विल गिव यू दैट डेफिनेशन वगैरह. सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, करेक्ट? तो ये 2 डायमेंशनल के लिए था. अब 3 डायमेंशनल के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल. अच्छा, एक चीज बताओ, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 लिखो तो सेम ही बात होगी क्या? Yeah, ये because case के it's लिए yes. To keep all of Yes, them sir. like, so you wrote like x2 minus x1, उसके बाद you're supposed to write y2 minus y1, but you wrote y1. That is okay, minus but y1. even if I do it from y1 minus y2, will the answer be correct or not? That'll be fine because yeah, because the- it's a square. Because of the square. Because अगर मान लो x2 minus x1 minus 1 आ रहा है, ठीक है, and x1 minus x2 1 आ रहा है, so दोनों का स्क्वायर करूंगा तो सेम ही आंसर आएगा ना. नेगेटिव भी हो गया तो भी नेगेटिव नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव, ठीक है? Talking about the midpoint formula, so midpoint formula is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ये पहले हमने 2D में पढ़ा है. 3D में क्या हो जाएगा? एक और डायमेंशन ऐड कर दिया, z1 plus z2 by 2. That's all. सेक्शन फॉर्मूला बताओ क्या होता है? m1 x2 plus m plus. Okay, go on. Smera, go on. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 is for the x coordinate, and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 is for the y coordinate. ठीक है. Similarly, tell for the z coordinate also. Same ही way में होगा. m1 z2 plus m2 z1 upon
m1 plus m2. ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल इसमें इंट्रोडक्शन है ना, तो बस 3 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल और ऐड कर दिया, z एक्सिस, सारे फॉर्मूले z के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुमको अगर स्ट्रेट लाइंस आता है तो 3D तो ऑटोमेटिकली आता है। अच्छा, मुझे एक सेक्शन चीज, फॉर्मूला के पहले क्या पूछा है? सेक्शन फॉर्मूला के पहले मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था। अभी कुछ लिखना मत, मैं बता दूंगा, सारे फॉर्मूलेस लिखवा दूंगा यार, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो 2D प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते थे? 4. 4। 4. क्वाड्रेंट्स क्यों बोलते हैं ना? Because they are 4 quadrants. Oh God. Quad is 4, करेक्ट। ठीक है, if I add one more dimension to it, z axis, तो कितने अच्छा मैं वर्ड नहीं बताऊंगा, बताओ क्या होगा फिर इसमें? 8. 8 कैसे? ऑक्ट्रेट। Oct. Octane. ऑक्टेंट्स, OCTANTS। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने फ्रेंच पढ़ी है क्या? डू यू हैव फ्रेंच पढ़ी है तो पता होगा ना Yeah. यार, 8 is for oct, I guess। Octans, right? 7 हाँ. 7 is for hep, so everything जो हम लोग नैनोगन डेकागन पढ़ते हैं, these are all French words, फ्रेंच की जो काउंटिंग तो होती ये है। केमिस्ट्री में भी है। And French is like derived from Latin, I think. That I don't know, I know French only। Ah, it is. ठीक है, चलो That's why like अब Latin, these come from Latin instead of French. ठीक है, तो अब 8 ऑक्टेंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स से ये एक अगेन कॉपी है, ठीक है, कॉपी के ऊपर एक डायमेंशन और ऐड कर दिया, तो अब इस कॉपी की फ्रंट साइड में कितने क्वाड्रेंट्स बन गए? 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये 4 हो गए। नीचे वाले 4 क्या होंगे? नीचे से भी देखोगे आप, बिकॉज z इज नाउ नेगेटिव। पहले यहाँ पे जो ऑक्टेंट्स देखे उसमें z पॉजिटिव था, तो नीचे भी जाना पड़ेगा, तो जब नीचे से देखोगे तो वापस से 4 और दिख जाएंगे, करेक्ट। तो 4 and 4 मेक्स इट 8। तो 2D में 4 क्वाड्रेंट्स थे, 3D में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और अच्छा, प्लेन क्या होता है? प्लेन पता है? व्हाट इज अ प्लेन? नहीं? So like the Yeah, area yeah. between like two axes is a plane. एग्जैक्टली, द एरिया बिटवीन, बहुत ही सही डेफिनेशन है, द एरिया बिटवीन टू एक्सिस इज अ प्लेन। सो प्लेन क्या होता है बेसिकली? अगर ये वापस से एक्स वाई एक्सिस है तो ये पूरा प्लेन है यार, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अब ये पूरी एक शीट बन गई ना। तुमको कोनिक में याद होगा तो हमने एक वो ग्राफिक देखा था जिसमें एक प्लेन कट कर रहा था 2 कोन्स को, तो वो होता है एक प्लेन। प्लेन और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? Plane is 2-dimensional. 2D का। Plane is 2D. हाँ, लाइन इज 1D, बट प्लेन के अंदर क्या होती है? प्लेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, प्लेन के ऊपर लाइन होती है, ठीक है, प्लेन कंटेन्स लाइंस, ठीक है। सो प्लेन और लाइन में डिफरेंस ये है कि प्लेन पूरी एक शीट ऑफ पेपर है, और शीट ऑफ पेपर पे अगर तुम लाइन बना दोगे तो दैट इज अ लाइन इन अ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन और लाइन का डिफरेंस समझ आ गया? चलो, ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं एंड देन विल गो टू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लिख लो कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एंड थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन इसमें, क्योंकि ये चीजें तुमको ऑलरेडी पता है, तो आखिरी में हमको कुछ नया पढ़ना होगा, तो विल डू दैट। अच्छा, तो कौन सी प्लेन्स होगी? 3 प्लेन्स मैंने लिखी है, तो वो 3 प्लेन्स को तुम बता सकते हो कौन सी प्लेन्स होंगी? X, Y, Y, Z, and X, Z. Z. करेक्ट, ठीक है।
Let me know when you are done writing. तो एक दो क्वेश्चन करेंगे. Done, sir. All right. Okay. So जैसे क्वाड्रेंट्स को हमने नेम किया था 1 2 3 4, वैसे ही हम ऑक्टेंट्स को भी नेम करते हैं. तो जब x z एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, तो आई मीन व्हेन यू लुक एट द अपर साइड ऑफ द पेज, सो दैट इज 1 2 3 एंड 4. ठीक है, जैसे नॉर्मली 2D प्लेन में होता है, वैसे 1 2 3 एंड 4. एंड नीचे वाली साइड पे क्या हो जाएगा, 4 5 6 सॉरी 5 6 7 एंड 8. समझे, 1 के जस्ट नीचे 4 होगा और 1 के जस्ट नीचे 5 होगा. ठीक है, 2 के जस्ट नीचे क्या होगा, 6 होगा. ऑलराइट, समझ आया. तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों एक्सिस का साइन क्या होगा, एक्स वाई जेड का साइन क्या होगा. X, Y will be plus. Z would also be plus for the first one. Positive. All positive then, I guess. ऑल पॉजिटिव. ओके, ठीक है. सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकंड में Y will X be negative. Negative Sorry, other. X will be Yeah, x Once. negative, x to positive. somebody Minus said y plus will plus. be negative. My mistake. I corrected that. Sorry. ओके, ठीक है. सो देखो, कंफ्यूजन का कोई इसमें वो नहीं है. तुम हमेशा इसको 2D में, ये जो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स है ना, फर्स्ट फोर ऑक्टेंट्स में, क्योंकि z ऊपर है तो z हमेशा पॉजिटिव होगा, तो z के साइन पे तो ध्यान ही नहीं रखना. बाकी जो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट चलता है वो 2D जैसा ही चलता है. ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑक्टेंट में भी नेगेटिव पॉजिटिव. एंड क्योंकि z तो हमेशा ऊपर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो z का कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, Negative, negative, positive. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, फोर्थ में Positive, negative, Positive, positive. negative, positive. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, फिफ्थ में Positive. Positive, positive, negative. पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ग्रेट. सिक्स्थ Negative, positive, Negative, positive. positive, Positive, negative. कूल. सेवेंथ में All negative. all negative. All negative. राइट. एंड एट्थ में X will Positive. be Positive, positive. negative, Negative, negative. negative. ठीक है. सो अच्छा, अगर तुमको कोई कोऑर्डिनेट दिया जाए और तुमको पूछा जाए कि कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो बता पाओगे इजीली. Let's say if I give you 2, Yeah. 3, -5, then you have to tell in which octant does it lie. So कौन सा octant हो? Fifth. Fifth. ठीक है, great. Yeah. All right. If you want to write this down, you can. And इसका ऐसे टेबल है एनसीईआरटी में, बट टेबल की जरूरत नहीं है, तुम लोग को खुद से फिगर आउट कर, कुछ याद नहीं करना है. सबसे पहली बात तो ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट में सर, फर्स्ट में पॉजिटिव 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 ऐसे सोच के बता रहे हो कि सेकंड में ऐसा होना चाहिए, तो तुमको खुद से फिगर आउट करना आना चाहिए. ठीक है, हाँ मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, तुम लोग खुद से ही साइन लिखो एंड देन रीचेक कर लेना.
Sir, can you go back? I want to check. Okay, sir. All right, everybody done? Quit out there. Great. The coordinates of a point in a three-dimensional is of course x, y, z. ठीक है. And मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्स वाई प्लेन पे मुझे कोई पॉइंट मार्क करना है इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशन, तो मैं कैसे लिखूंगा उस पॉइंट को? X, Y, 0. x, y, 0. Great. Why 0? Because it is only in the xy plane, so z coordinate is 0. ऑल राइट, ठीक है. सो वैसे ही हम तीनों प्लेन्स के बारे में देखेंगे. तो वाई जेड प्लेन की एक्सेस, अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट अ 2D प्लेन, तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दैट 2D प्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन? जैसे हम एक्स एक्सेस को लिखते हैं y इक्वल टू 0, राइट? y एक्सेस को लिखते हैं x इक्वल टू 0. तो वैसे 2D प्लेन के लिए क्या इक्वेशन हो सकती है? Z equal to 0. ग्रेट. z इज इक्वल टू 0. परफेक्ट. z की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है. तो चलो yz प्लेन के लिए बताओ, एक एक करके बताओ. आदित्य तुम बताओ yz प्लेन पे कोऑर्डिनेट कैसे होगा? आई मीन हाउ विल यू राइट अ कोऑर्डिनेट इन yz प्लेन? x, y, 0. नहीं, yz प्लेन है, मतलब x का तो कोई रोल ही नहीं है ना. Then 0, y, 0. y 0, yz प्लेन है. Sorry, y, z. हाँ. हाँ, Over there. तो वो yz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? देखो, yz प्लेन मतलब x का कोई रोल नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. तुमको प्लेन के नाम से समझ आना. वाई जेड प्लेन मतलब y और z एक्सेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, x का कोई रोल नहीं है. तो वाई जेड प्लेन पे x कोऑर्डिनेट इज 0, 0, y, z, एंड इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी x इक्वल टू 0. सिंपल. ठीक है. सो सिमिलरली टेल मी फॉर zx प्लेन. ऋषित, यू टेल मी कि zx प्लेन पे कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे? X 0 Z. x 0 z, and what will be the equation? Y is equal to 0. Y is equal to 0. All right. Arnav, you tell me for xy. Yes, sir. So x, y, 0. X, y, 0. Okay. Z equals to 0. Z is equal to 0. Great. ठीक है. अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे फॉर अ 3D प्लेन? 0, 0, 0. 0, 0. चलो, ये तो काफी इजी है. 0, 0 and 0. Great. एंड x एक्सिस पे पॉइंट कैसे लिखेंगे? कोई भी x एक्सिस पे ही अगर पॉइंट लिखना हो तो? x, 0, 0, 0. Nice. Y axis पे it will be 0, y, 0, and z axis पे it will be 0, 0, z. Correct? Yes, sir. All right. Moving on. Let's write the distance formula. लिख लो, तुम लोग खुद से लिख लो, वैसे तुम लोग को भी आता होगा. ये चैप्टर वैसे तुम लोग मुझे पढ़ा सकते हो, पता है, बहुत इजी चैप्टर है. Okay, quickly tell me what will be the distance of a point x, y, z from origin. X square plus Y square plus Z square, like under root. Okay, square root of x square plus y square plus z square.
ठीक है, कोई डाउट है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है. तो एक्स एक्सिस के लिए होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को नेग्लेक्ट कर दो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. वाई एक्सिस से क्या होगा, वाई को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड एक्सिस के लिए इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So it's like distance of a point from a axis. अच्छा, ये कंफ्यूजन मत रखना, कभी कभी प्लेन बोल देते हैं, कभी कभी एक्सिस बोल देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है. प्लेन यूज किया तो एक्स एंड वाई. हाँ, प्लेन का भी अभी बात करते हैं, प्लेन में कैसे देखेंगे डिस्टेंस. Can I change the slide? All good. हाँ. ठीक है. So next thing is distance of a point from a plane. अब ये तुम लोग को बताना है. So point again x, y, z है, and planes क्योंकि हमारे पास तीन ही planes है, तो x y plane से बताओ क्या डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का. Z. mod z. z नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अच्छा, जिनको नहीं समझ आ रहा वापस से आ जाते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं, लेट्स से. ठीक है, ऊपर z एक्सिस है, ज्यूम कर लेना x, y, z, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, करेक्ट. लेट्स से कोई भी एक पॉइंट है x, y, z जिसके तीनों डायमेंशंस हैं, वो कोई एक ऑक्टेंट में होगा. लेट्स से आई एम टेकिंग इट टू बी इन द फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, तो मैं यही डिस्टेंस निकालूंगा कि ये इस प्लेन से कितना ऊपर है. खाली ये डिस्टेंस निकालना है, मुझे एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल ये देखना है ये पॉइंट इस प्लेन से कितना ऊपर है. करेक्ट, तो वो डिस्टेंस कितना है, वो z एक्सिस है केवल, जो भी उसका z कोऑर्डिनेट है, दैट इज ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन. सेम अगर इफ यू टॉक अबाउट द yz प्लेन, सो yz प्लेन ये वाला प्लेन होगा. लेट्स से कोई पॉइंट यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो दैट विल बी द x डिस्टेंस, जो भी उसका x कोऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस होगा. तो प्लेन और एक्सिस में कंफ्यूज मत होना, दोनों में अलग अलग तरीके से डिस्टेंस निकलता है. प्लेन मतलब पूरा एक शीट ऑफ पेपर, हमेशा ऐसे याद रखो प्लेन को. ठीक है, So, यस. do we have to put mod? Like, isn't it like under root z square? So it'll be positive, right? या इट कैन बी लाइक दैट, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आई मीन अगर z नेगेटिव है तो तुम लोग डिस्टेंस नेगेटिव मत करके आ जाओ. ठीक है, दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज.
So yz plane के लिए it will be modulus of x, and for the xz plane it will be modulus of y. कोई doubt है? No. So The next point is for the section formula. अच्छा, section formula straight lines में दो पढ़े थे, एक तो internal पढ़ा था और एक external पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ कुछ? Sir, can you go back 1 second? I got disconnected. सर ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, नॉट स्ट्रेट लाइंस। हाँ मतलब पढ़ा था ना तुमने? sir, I think in add and next to subtract. I remember that. हाँ, the formula is for ये समझ subtraction. नहीं आया था कि इंटरनल कैसे करना है, कितना एक्सटर्नल है, ये कभी अच्छा, समझा नहीं। हाँ इसका आइडेंटिफाई मतलब करना। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आया कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं उसको? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो मुझे बताना, अगर मैं let's say this is line PQ and this point is dividing the line PQ into certain ratio, let's say that ratio is m/n. So ये m point is internally dividing or externally dividing PQ? Internally. Internally. तो externally कैसे होता है फिर? A point not on the line which divides the And will be on that. Correct. ठीक है. So let's say you have a line PQ and there's a point M which is outside the line PQ. ठीक है? And this distance, that is PM is M, is to this distance QM is N. ठीक है? So basically PM by MQ is equal to M by N. तो मतलब वो पॉइंट लाइन पे नहीं है, लाइन के कहीं बाहर है, बट उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है फिर। ठीक है, तो अगर तुमको नोट डाउन करना है तो कर लो। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली अगर हो रहा है तो इट विल बी m1 यूज करते हो या m यूज करते हो, लेट्स से m यूज कर लो, mx1 प्लस ओके, अगर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो सो इट विल बी x1, x2 एंड दिस विल बी y1, y2 एंड लेट्स से m1 एंड m2 ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। m1, m1x1, m1x2 प्लस m2x1 So how divided by x1, x2? how, sorry, How are both x1 and x2 at P? okay, my bad. So x1 y1 and y1 x2 y2 होना Correct, चाहिए. correct. Sorry. So is it right mn n के फॉर्म में मेरे को 1 2 में कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर मैं. हाँ, जैसे तुमको कंफर्टेबल हो वैसे लिख रहे हो। मुझे m1 m2 कंफर्टेबल। हाँ, वो उससे एक्चुअली होता है कि 2 के साथ 1, मैं तो ऐसे याद रखता था, 2 के साथ हमेशा एक 1 आ जाता है। यस सर। तो मैं केवल x के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग लिख लेना, ठीक है? m और n की टर्म्स में लिखना है तो आई राइट दैट mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस फॉर्मूला से आ जाएगा क्या, सेक्शन फॉर्मूला से? So you can take m and n as one each. Yeah. Great, yeah, So you people it are will very become like smart. 2m. m is 1 and n is 1, ठीक है। अच्छा, मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला पता नहीं था, तुम लोगों ने बता दिया तो याद हो गया। Okay, I'll सर change the हमें slide now. बाकी सब के लिए रखना है। Yes, Rishit. नो, आई आस्क कि हमें बाकी सब लाइक y and z का हमें खुद करना है क्या? हाँ यार, ऑब्वियसली लिख लो, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो,
सर आप लिखोगे तो ही हम लिखेंगे, ऐसा मत करो यार प्लीज। मेरे एग्जाम्स हो गए 11th के बाय द वे। Nice. ऑलराइट, तो एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 या m1 प्लस m2? Minus. Minus. श्योर? Yes. Yes, आई एम sir. रिलाइंग ऑन यू, मुझे नहीं पता है सच में। Array is sure, sir. चलो फिर ठीक है। बाकी के मैं लिखूं क्या, या तुम लोग लिख लोगे? अब ऋषित ने बोला है तो फिर लिख ही देता हूँ। नहीं सर, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। चलो फिर z का नहीं लिख रहा, ऋषित ने मना कर दिया तो नहीं लिख रहा, ठीक है। All right, so the next formula is, अच्छा ट्राइसेक्शन पढ़ा है तुम लोगों ने? ट्राइसेक्शन क्या होता है? So this is dividing into 3 equal parts. करेक्ट करेक्ट। मुझे कुछ बता रहा क्यों नहीं पढ़ रहा यार, आज तुम लोग को सब कैसे आता है पहले से? So सर points of देखो, आप trisection, कभी भी बाकी बैचेस में ऐसा दोगे ना कि एग्जाम्पल कि ये वाला बैच सबसे अच्छा है, कुछ सीखो। मैं तो बोलता हूँ 11th का बैच सबसे अच्छा है, बट कोई पूछता नहीं है तो पता नहीं, मैं खुद को ही बोलता हूँ ऐसा। हाँ तो सर एक्चुअली as long as you know it, it's fine. okay, so let's say you have p and q and let's say m is to n, I mean m और n दो पॉइंट्स है, तो ये m और n दोनों pq को ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। अगर m ट्राइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो विल बी 1:2, एंड अगर n ट्राइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो विल बी 2:1। as simple as that. Don't ask me, as सर simple as वैसे that. मैं एक्सटर्नली का थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी तक समझा नहीं। एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो भी तो इंटरनली जैसे ही कर सकते हैं ना, कि अगर देयर इज पी क्यू लाइन एंड देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन कॉल्ड एम, तो वहां से तो वो प्रोसेस तो सेम ही है ना, तो सबट्रैक्ट क्यों? प्रोसेस सेम है बट वो पॉइंट लाइन पे लाइन ही कर रहा है, उसके लाइन पे उसको नहीं रहना भाई, उसकी मर्जी है। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई तू तो उस लाइन पे गया, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वो बोल रहा है, वो जो पॉइंट है ये एम, वो बोल रहा है कि यार मेरे को पीक्यू पे नहीं रहना, मुझे पीक्यू के बाहर रहना है। तो पीक्यू लाइन के अगर बाहर कोई पॉइंट है एंड देन इट इज डिवाइडिंग इट इन द सेम रेशियो, इन दैट केस वी यूज द एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? So I have a doubt. हम्म, Like you find the ratio 1 and ratio 2, but like what do you get from that? Like how do you get like all the coordinates? that's a very nice question. Who will answer this? We use a section formula only, no? Wow. No, but like अरे, won't there m be and m के, a center? तो पहले we Yeah. put m के value as 1 and then n के value as 2, and then next we'll Exactly, do and then we'll m put के m value as as 2 2 and and then n n as के 1. value 1. Okay, Super got question it. and super answer. Nice. चलो ठीक है। हाँ सेंट्रोइड के बारे में मैं पूछ रहा था, सेंट्रोइड क्या होता है सभी से बता दो। Point where three medians of the triangle meet. Together. Nice. What are medians? The point line Line from joining one vertex to midpoint the of the one other face of side. the triangle which divides it into two halves. Divides into two half. अच्छा वो दोनों ट्रायंगल के एरिया भी सेम होते हैं क्या? पढ़ा है सबने पढ़ा है, तो ऐसे लुक्स मत दो मेरे को कि सर हमको तो पता ही नहीं है। A Can you median repeat? divides Probably a triangle midpoint into है two तो equal हाँ। halves. Yeah, it's congruent, right? It's not congruent, but it divides it into two equal halves. ओके एंड चलो, वैसे कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस था नहीं, इससे मैंने ऐसे ही पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला था व्हाट इज अ ट्रायंगल। तो चलो लिख लो, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं।
हाँ सेंट्रोइड 2D प्लेन में कैसे निकालते थे? तो अगर तुम्हारे ट्राइंगल के लेट्स से x1 comma x2 plus x3 upon 3, right, for the x coordinate. नाइस करेक्ट. सो बाकी तीनों के लिए भी ऐसे ही होगा. ठीक है, तीनों आई मीन बाकी दोनों के लिए. So can you repeat? It is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, and z1 plus z2 plus z3 by 3. ऋषित लिखना है क्या फॉर्मूला या छोड़ दूं? आपकी मर्जी से. नहीं यार, तुम बोलोगे वैसे ही करेंगे. Okay, so that's the whole chapter. अब चल कर सकते हैं. So these are like all wait. Can you explain again? What to explain? Like what is x1 plus x2 plus x3 by 3? Centroid of a triangle, the place where the three medians meet. Okay, so that's for the x coordinate of the centroid. Correct. Okay, got it. ये let's say this h point का coordinate. Guys, it's already 4:43. थोड़ा जल्दी कर लो यार प्लीज, वरना लॉग नहीं होगा अच्छे से. Done. Done, sir. अच्छा, when do we say that 3 points are collinear? When all three of them lie on the same line. Okay, and how do you solve that problem? Let's say अगर मैं तुमको 3 पॉइंट दे देता हूँ and you are being told कि check whether these are collinear or not. How do you do that? I know Distance of like first and second and third point is equal to distance of first and third point. Okay, any other approach? yeah, so when we take the 3 points का area of triangle should be 0. Nice. ठीक है, and उसके अलावा कोई approach? The slope of the You point have should be the 0. Oh, sorry, 1 minute. Correct. if you By have the the way, Ritu, coordinates, just plot it in the graph. yes, Ritu, you were saying something. Slope of? The line should be 0. No, it should not be 0. Let's say अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन तीनों का स्लोप सेम होगा ना? करेक्ट. Yes, sir. तो तीनों का स्लोप निकाल सकते हैं. तीनों का स्लोप अगर सेम है दैट मींस द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन. या फिर मैं क्या करता था, 2 पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन लिखता था, एंड इफ द थर्ड पॉइंट इज सैटिस्फाइंग दिस लाइन दैट मींस द थ्री पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन. अगर सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स दे ऑल ऑफ दीस थ्री आर नॉट इन द सेम लाइन. बट क्योंकि अभी हमने लाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ी है फॉर अ 3D प्लेन, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे. ठीक है. So first question is show that the points, लिखो मैं points लिख दूंगा. Question लिखो, show that the points P which is -2, 3, 5, Q which is 1, 2, 3, and R which is 7, 0, -1 are collinear. So I have a doubt. Yes. How do you find out like a slope of a line that has like 3 coordinates?
You learn that in your grade 12. अभी कल इंट्रोडक्शन है ना, तो कल ऊपर ऊपर से समझ लें, ठीक है? So मुझे एक छोटा डाउट है. How can we usually say PQ will be equal to QR or something like that? Because like this नहीं, ये not कौन बोल रहा है necessary PQ कि is equal to QR? Who is saying this? तो ये कोलिनियर के लिए फिर क्या था? कोलिनियर के लिए होगा कि तुम तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, ठीक है? एंड जो भी डिस्टेंस अगर ऐड होके दे आर एडिंग टू समथिंग, लेट्स से यू गेट द डिस्टेंस एज 2 3 and 5, so 3 and 2 add up to 5, करेक्ट? मैं तुमको नॉर्मल रूल बता देता हूँ. लेट्स से ये तीन पॉइंट्स हैं P Q and R. So if PQ plus QR is equal to PR, therefore you can say that the points are in the same line. Yeah. Right? So that is what you have to do. अच्छा, मुझे क्विकली बताओ PQ का डिस्टेंस क्या आ रहा है? √14. √14. QR का डिस्टेंस क्या आ रहा है? √56. √56. और PR का डिस्टेंस क्या आ रहा है? Root 81 plus 9 plus 26. Root 126. ठीक है, इन सबको स्क्वायर रूट ऑफ 14 में कन्वर्ट करो. √14, 2√14 and 3√14. 2√14 and 3√14. तो PQ और QR को ऐड करोगे तो PR का सम मिल जाएगा. करेक्ट और करेक्ट? Correct, right. So that means the 3 points are collinear. ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लेम क्वेश्चन है कि अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो तुमको बताना है कि वो वर्टिसेस हैं रोम्बस के या नहीं है. तो इसके लिए तुमको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो बताओ क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज रोम्बस की? All sides sides are equal. like same. तो स्क्वायर में भी होती है. Diagonals are equal. Opposite sides are parallel, I guess. ओके नहीं, बट ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर इज अ रोम्बस. ठीक है, स्क्वायर के लिए तुमको Diagonals are एडिशनल चीज perpendicular to each other. in a rhombus they are perpendicular, but how is a square different from a rhombus? 90 degrees each All side. angles in square are 90. Exactly, vertex angles of the square is 90 degree, whereas it can be any other angle possible in a rhombus. तो अगर rhombus तुम्हें prove करना है तो the smallest property to be proven is that all of the sides have the same length. So second question is, show that the points, I'm writing down the points, P is 5 comma minus 1 comma 1, Q is 7 comma minus 4 comma 7, R is 1 comma minus 6 comma 10, and S is minus 1 comma minus 3 comma 4. फटाफट से सारे डिस्टेंस निकालो एंड मुझे बताओ कि सारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. एंड स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं.
Yes, guys, what is the distance PQ? Root 49. 7. 7. QR? Also 7. Also, Then RS? doing. Okay, so I'll write doing. So since QR is not equal to RS, hence it is not a rhombus. 7 is not equal to doing. So it's not a rhombus. Correct? root RS 49. is also 7. Root 49. Okay. PS? Seven. 7. 7. Sure. Okay. So यार Yes, sir. तब भी सारी साइड्स इक्वल नहीं है ना. Yes, 40 sir. स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 के इक्वल तो होता नहीं है ना. तो rhombus तो फिर भी नहीं हुआ. So therefore PQRS is not a rhombus. अच्छा कोने के वो क्वेश्चंस ट्राई किए थे क्या किसी ने? So the two questions, right? Yes, Circle Sir. one. the two questions. I was able to do the first one, second one I couldn't. Alright. I'll change the slide. The third question is, चलो ये मैं लिख देता हूँ. So everyone has read the question? Yes, sir. All right. So 1 basically second, sir. question. Is it like AP plus BP is equal to 10? Yes, sir. Right? And Yes, sir. locus set of points is again locus. And locus पे condition है कि AP plus BP has to be equal to 10. So तुमको कैसे solve करना है? AP का distance निकालो. P is random point x, y, z. उसका distance निकालो A से, उसका distance निकालो B से, and that is equal to 10. ये put कर दो.
अच्छा, एनीबडी हु कुड टेल मी कि इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? I think we have to Right hand remove. side. I think we You should have to square. remove the square root. सुंदर सुशील आंसर बनाना है तो कैसे बनाओगे? You square Squaring both both sides. You 100 square both and sides. अच्छा, 1 second. अगर तुम इस साइड इसी सिचुएशन में स्क्वायर कर देते तो 2ab वाला टर्म एक बार सोच के देखो क्या होगा। सर 2ab फिर रूट आ जाएगा ना? फिर रूट आ जाएगा, करेक्ट। एंड वो रूट वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन भी कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे पेपर में यही करते रह जाओगे। तो व्हाट कैन बी किसी एक को आरएचएस ले जाएं लेफ्ट में। करेक्ट, करो वो करो, किसी एक को आरएचएस ले जाओ, उसके बाद स्क्वायर करो। अच्छा, बट उसमें भी स्क्वायर रूट आएगा क्या 2ab वाले टर्म में? सोचो सोचो। No, sir. नहीं आएगा। अच्छा, एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, सब लोग देखना। x minus Wait, 4 it'll the be whole- there. Okay. So this will be equal to, I'm taking this particular term to the other side. So it will be x plus 4 the whole square plus y square plus z square. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे तो विल गेट x minus 4 the whole square plus y square plus z square is equal to 100. So I'll write one more step, squaring both sides. Squaring. And when you write minus 2ab तो ये सेम टर्म यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में। Yes or no? Yes. अच्छा, तो मुझे इतना पार्ट सॉल्व करके बताओ, स्क्वायर रूट को एक बार आइसोलेट कर दो एंड बाकी सारा पार्ट सॉल्व करके बताओ x और y की टर्म्स में क्या आ रहा है। Find the equation is same as find the points of P. Of course, ऋषित, वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स उस लाइन पे ही तो लाई करेंगे, या जो भी लोकस आ रहा है। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब लोकस होता है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो, y स्क्वायर और z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। ये और ये तो कैंसिल हो गया। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसमें ये कैसे खुलेगा, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, so that is minus 8x, एंड यहाँ से जनरेट होगा प्लस 8x। x स्क्वायर और 16 दोनों साइड से अभी भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस 8x, ये वाला 8x Yes, जब sir.
लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बी -8x minus 8x, so that contributes to -16x. 100 वाला इधर चला जाएगा, so it will be 100 will be moved to the left hand side and you'll get -100. So how get are that? both negative? Okay, x minus 4 the whole square, so यहाँ से -8x आया, and similarly x plus 4 the whole square generates +8x. So when this +8x move towards the left hand side, you get -8x minus 8x, which is -16x, and 100 when moved to the left hand side, you get -100. Okay, I had taken the opposite, so I got like a different one. All right. So on further simplifying, I get this equation as 4x plus 25 is equal to 5 times square root of x plus 4 the whole square plus y square plus z square. अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? बस सर इसके बाद लिख देंगे कि हमसे इतना ही सॉल्व हो रहा है मैम, बाकी आप देख लो. तो इसके बाद तुमको एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? अब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट का टर्म नहीं आएगा. सो जब भी दो स्क्वायर रूट के टर्म साइमल्टेनियसली होते हैं तो प्रोसेस क्या है, पहले एक स्क्वायर रूट ऑफ टर्म को दूसरी साइड लेके जाओ, ठीक है? दोनों साइड्स पे एक एक स्क्वायर रूट रखो, स्क्वायर करो, एक स्क्वायर रूट वापस जनरेट होगा, उस स्क्वायर रूट को आइसोलेट करो एंड वापस से इक्वेशन को स्क्वायर करो. So when you'll square this, and after solving you will get 9x square plus 25y square plus 25z square is equal to 225. So did you like take the both equation to the other side and then divide the whole side with 4, like both the side? Yes, -4. ऐसा इक्वेशन तुम लोग सॉल्व कर लोगे. इट्स जस्ट दैट मुझे प्रोसेस बताना था, जब दो स्क्वायर रूट्स आते हैं तो कैसे इक्वेशन को डील करते हैं. ठीक है, अभी कैलकुलेशन मत करो, तुम लोग कर लोगे कैलकुलेशन. 5 + 5 5 + 5 is 10, राइट? सबको पता है ना? तो कैलकुलेशन सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, एनी डाउट्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन? Also, Great. Let's move to the next question. Question number बता दो please. 4. Okay, quickly read the question and you have 5 minutes to figure out कि करना क्या है. Solution, I mean, I don't want the final answer, but मुझे बताना कि कैसे अप्रोच करोगे.
So I Yes. figured out like what to do, I think. Okay, great. That's okay. Yeah, tell me. So like you can take the coordinates of the point on the YZ plane as like 0, comma x, comma y. I mean 0, comma y, comma z. Sorry. Okay. So you already have like the x ka coordinate. So you can put that as distance formula to get the ratio and then you do the other two. Correct. किस किस को समझ आया? अच्छा, how will we take the ratio? 1 You is can to take k. 1 your is to case to 1. exactly, or k is to 1. K is to 1 ले लो, better होता है. K is to 1 ले लोगे. So basically इसमें क्या होता है कि एक ही वेरिएबल है. अगर तुम a is to b ले लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. बहुत दिक्कत तो नहीं होगी, बट हाँ सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी. ठीक है. सो अच्छा, ये k is to 1 कैसे ले लेते हैं a is to b को? So you divide it by like b. करेक्ट, यू डिवाइडेड इट बाय b. सो अगर दोनों तरफ b से डिवाइड कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज a by b डिवाइडेड बाय 1, एंड वी से दिस a by b टू बी k, सो दिस इज k is to 1. ठीक है. एंड गाइस चीजों को याद मत करो यार, समझो कि वो k is to 1 क्यों आता है. ठीक है. ऑल राइट, सो करना क्या है मैं बता देता हूँ. तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास. लेट्स से अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एंड द प्लेन इज लाइक पासिंग थ्रू, लाइक अज्यूम कर लो ऐसा एक प्लेन है एंड वो ऐसे इस लाइन को कट कर रहा है. लेट्स से द रेशियो इज k is to 1, एंड क्योंकि ये yz प्लेन है तो yz प्लेन के कोऑर्डिनेट्स आर 0, y, z फॉर्म में. सो कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट विद द सेक्शन फार्मूला and using k is to 1 वाला part, like using the ratios as k is to 1, and उसका x coordinate को 0 से equate कर दो and calculate the value of k and tell me. सर सब कुछ ही हम कर देंगे तो फिर आप क्यों ही हो यहाँ पे? ओके, x कोऑर्डिनेट यही आ रहा है 3k plus 2 divided by k plus 1, Right. right? And So x use coordinate, external formula because I'm getting like a negative answer for k. okay. तुमने पहले ही बोल दिया यार, मैं क्वेश्चन करने वाला था इस पर. दिस इज रॉन्ग. Sorry. So you So I get said- k, correct. You get k as minus 2 by 3. So when you get a negative sign, this means that you have, like, the point is dividing the line externally. Okay, अगर positive आता है that means it's internally, अगर negative आता है so it is externally. तो आप confuse मत होना, as it is k को minus 2 by 3 रखो, जो भी तुम्हारे y और z coordinates. So how are you getting 2 by 3? What are you Why is getting? it? हाँ, so you
You take x as 3k plus 2 upon k plus 1 equals to 0 as it is saying yz plane, and from there you just find k. Yes, and Ritu, you only told us कि सर इसको 0 कर दो, तो मैंने तुम्हारी बात ही मानी है, इसको 0 कर दिया. So I solved it the same way, but I'm getting 1/2. 1/2. अच्छा. Okay, kids will now see how to apply the section formula. So देखिए यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है, and a coordinate ये है, b ये है, m1 x2 m1 x2 plus m2 x1, यार वही तो लगाना है. यही आएगा k is equal to -2/3. एक बार वापस रीचेक कर लो. तो टेक्निकली हमें लिखना है 2/3 and the point divides it in externally or something Exactly. like that. You have to write the line since the value of k is negative. It means that the point is dividing the line externally, and after that, when you'll be calculating the coordinates, what will you do is you'll just put k as -2/3. देखो मेरे को बताओ, x coordinate will be 3k plus 2, comma k plus 1. I'm writing every coordinate in terms of k. y coordinate क्या होगा? 5k plus 4 divided by k plus 1. ठीक है. And z coordinate क्या होगा? -4k plus 5 divided by k plus 1. एक बार वेरीफाई कर लो, बताओ यही आंसर्स आ रहे हैं क्या? The other way around, but yeah, same only. Okay, ठीक है. And after this, see, we got k as -2/3. तो तुमको ये पता चल गया कि this is dividing the point externally, right? So अब तुमको ये कंफ्यूजन होगा कि सर अब तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. उसकी जरूरत नहीं है. तुमको क्या करना है, सीधा k को यहाँ वैल्यू पुट कर दो, -2/3 as it is. जो वैल्यू आई वो पुट कर दो, and you will get the required coordinates. ठीक है. So could you just repeat how did you take y and z also as 0? I did not take y and z as 0. yz प्लेन पे क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है, सो कोऑर्डिनेट विल बी 0, y, z. x कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, क्योंकि x Yeah, that I कोऑर्डिनेट 0 understood. होगा. So for here, basically, you're taking it as y and z. Since we have the value of k, we just have to put it. यस, तो x, तुमने x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 करा, वहां से k की वैल्यू मिल गई, एंड उसके थ्रू हम y और z के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं. Are you getting what I'm trying to say? Understood. Okay, great. So quickly put the value of k and tell me the coordinate. अच्छा, अब इसमें पुट करके कैलकुलेट मत करना है, x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है, तो ये तो 0 ही आएगा सॉल्व करके. हाँ, बट ऋतु ट्राई कर सकती थी. अगर k को -1/2 रखती तो she'll get some positive answer. So I found my mistake. I instead of like multiplying, I added it to the 0. ऋतु इनकरेक्ट. तो I'm expecting कि स्मेरा का आंसर करेक्ट होगा. देखो, the correct answer is 0, 2, 23. Is there anyone जिसको अभी भी समझ नहीं आया कि कैसे सॉल्व करना है या कैसे हमने सॉल्व कर दिया? अर्नव, सनत. I understood it. Okay, सनत. Got it.
So I got it. You got this 2,23. Yes. All right, great. Should we move to the next question now? Okay, Ritu, good to go. Mistake identify हो गई या नहीं हुई? Yes, sir. So the next question is if origin and also guys, did you try the NCRT of differentiability? Sorry, differentiation or derivatives, whatever. Started with it. I haven't finished. Miscellaneous is left. Miscellaneous is left. Rest everything done. What about conics? Conics हो Conic- गया पूरा? Conics हो गया. The second sum of the third sum is left. The rest of them. So you have a doubt in that, or you are like you have not tried that question? Oh no, I haven't tried it as yet. All right. Great, Ritu, very fast. So yes, A is correct. Ritu, check the sign once. Okay, you're getting B as 16 by 3. Smell is also getting 16 by 3. No, Ritu, C is incorrect for sure. Let me check. Oh, you'll get B as minus 16 by 3. Yes, you'll get minus. The shift, no? It will become negative and then upon 3. Correct. So A is minus 2, B is minus 16 by 3, and C is 2. Yes, Adit and Arnav both I'm correct. getting positive. So I'm getting positive. Okay, और अगर मैंने negative
inductive minus. proof. Oh, no. So that will become plus then if you shift. If they must have got 3b plus 6. पॉजिटिव ही आएगा यार, मेरी मिस्टेक है एक्चुअली, मैंने -3b लिख दिया है, ये +3b था क्वेश्चन में, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एक्चुअली x coordinate of the centroid will be 2a minus 4 plus 8, that will be +4 divided by 3. This will be the x coordinate. The y coordinate will be 16 minus 3b divided by 3, and the z coordinate will be -4 plus 2c divided by 3. Correct? Individually सबको 0 से equate करना है. So from A you get A as -2, you get B as 16 by 3, and you get C as 2. Okay. Cool. Anybody, any doubts in this question? No? So the next question is find the ratio in my summer breaks. I'll do a course for handwriting improvement. Okay, so you'll see my improvised handwriting by next year. Guys, do you remember angle bisector theorem? Also. No. Okay. Kind of. नाम सुना है क्या कभी? So सुना है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा. So a line that divides the angle in equal halves, was that angle bisector? That was the angle bisector, but I'm asking angle bisector theorem. अच्छा पहले question कर लो. After this we'll discuss. Okay, and anybody who can explain me how to do this question? Before solving, first tell me how are you doing. Ritu, what is this x equal to 1 by 2? Oh, sorry, I found the value of x instead of like finding the ratio. Sorry. Okay, but ratio you might have already got now. अगर x की value मिल गई है तो. No, you don't need to find k in the first part. Is it? I don't know how you're solving this.
So it'll be like k plus 1 upon k plus 1. So that's like 1. K is to Okay, 1 ratio, basically. अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आया कि कोऑर्डिनेट में हो क्या रहा होगा. देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, यू हैव 2 पॉइंट्स and let's say you have a plane, ठीक है, and this plane is cutting this line at one point. Let's say that ratio is k is to 1. ठीक है, तो तुमको ये k की वैल्यू निकालनी है, that's all. तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. ये So वाला which पॉइंट, point? the point of Oh, intersection of the line and the plane. हमको ये कोऑर्डिनेट पता है, हमको ये कोऑर्डिनेट पता है, राइट? ये वाला और ये वाला, इससे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके तुम ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. एंड ये वाला कोऑर्डिनेट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स द प्लेन एंड द लाइन आर इंटरसेक्टिंग. सो वही करना है. प्लेन की इक्वेशन ऐसे होती है, देखो 2x plus 3y plus 5z equal to 1 represents a plane in 3-dimensional form. ठीक है, सो तुमको सेक्शन फॉर्मूला से पहले ये वाला पॉइंट निकालना है एंड दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द प्लेन एज वेल. Facha, could you just explain, like, we'll still get it in terms of k or something like that only, right? No, you'll get the value of k when you put all of the coordinates in terms of k in this particular plane. x, y, z तुमको k की टर्म्स में मिल जाएंगे एंड x, y, z को जब तुम इस प्लेन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो पूरी इक्वेशन k की टर्म्स में आ जाएगी. When you'll solve this equation, you'll get the value of k and k की वैल्यू आ गई तो फिर सब कुछ कर सकते हो. Ritu, check it again. -2/3 तो नहीं आ रहा था. No. Check the sign. wait, one. Oh, I forgot Yes. this. Oh, yeah, I forgot this. Arnav correct. Ritu check. Yeah, Ritu correct. Adit correct. I did the ratio wrong. I'm sorry. Oh, I forgot to change the sign, my bad. ये मेन एग्जाम में मत करना बस, ठीक है. Okay, Smera correct. Now waiting for Adit. Sorry, Rishit and Sanat.
And whenever you're solving a question, try to visualize कि हो क्या रहा है या फिर छोटा सा फिगर बना लेना, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो इजीली समझ आ जाता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं. Okay, by the way guys, 10th में तुम लोग की क्लासेस कौन लेता था मैथ्स की? Yes, Sanat, correct. Go somewhere else. Sometimes Lasya ma'am, sometimes Lohit sir. Okay. Sometimes And you Vishali had ma'am also. online classes only, right? Yeah. 10th में. Yeah. So you have never had offline classes in Y Academy? I mean, I used to- before COVID. And in 9th. I've had. I used to go somewhere else. So yeah. Okay. I did like a year. had I like- was in 9th. I took like 2 trial classes before getting admission, so I guess that counts. Okay, and all of you were on the same branch या different branches में जाते थे सब लोग? Joined in the 11th. I joined in the 11th Y Academy. Yeah, for the rest of the people, the ones who had joined in the 9th grade. No, We'd have we were different not in the branches. Podar like was he's from a Podar, branch. Ryan was Ryan. सब लोगों ने एक साथ बोले कुछ समझ नहीं आया वापस. Yes, Rishit. So like Podar was done in Khar, where Ryan did not come, and maybe Ryan did it in somewhere else. I don't know, but Podar was Khar, and only Podar students came there. Yeah, Ryan students had the class in Malad with Orchid students. Okay. Nice. And there also Lohit sir and Lasya ma'am were teaching, right? Yeah, and Ridhima ma'am for bio. Okay, yeah. Okay, everybody done? Question हो गया? 6th question. कोई doubt है? No. तो एक बार आंसर बोल सकते हैं? यार आंसर मुझे भी नहीं पता. तुम बताओ तुम्हारा क्या है? मुझे लग रहा है मैंने कहा कैलकुलेटिंग एरर किया है. मुझे भी सेम ही लग रहा है, तो पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ कि मेरा भी वही आ रहा है. मुझे 14/21 मिल रहा है. 14/21 मिल रहा है. अरे मेरा तो 2/3 आ रहा है. तुम्हारा भी सेम ही आ रहा है. एक बार चेक करो शायद. सेम ही है क्या ऋषित? अरे 14/21 सेम ही होता है यार. 2/3 होता है. Seven twos are 7 threes are, so this is equal to 2/3. All right. So 2 more questions for this. Acha, now before that, let's say you have 2 comma minus 3 comma 4. Distance of this particular point from the YZ plane will be how much? 2. Okay. 2. All right. Any other answers? No, sir. Everybody agreeing on 2? Yeah. Okay, yes. So 2 is the correct answer. All right. Distance of this point from the x-axis will be how much? 5. 5. Sure. Square root Yeah. of -3 the whole square plus 4 the whole square. So that will be 5. Okay. Last question. What is the distance of this particular point from, let's say, xz plane?
3. 3. Hello. Three. 3. -3. Correct. -3 is more perfect. -3 or 3? Distance Sir, won't be negative. 3. It can't be negative. Aditya is doing like this. Okay. Okay. +3. All right. चलो ठीक है. 2 क्वेश्चन और करेंगे and के बाद वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही होगा. ठीक है. सर इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे ना? हाँ है तो इतने ही. और पढ़ ले अपन 12th का भी पढ़ लेते हैं. प्लेन और लाइन की इक्वेशन. नहीं सर, That is 12th actually- के लिए बस आप प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशंस फंक्शंस करवा देना. That's enough. हाँ यार सर मुझे वो नहीं इनफ आती है, है वो करवा दीजिए. प्रोबेबिलिटी. 12th की मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती है. सच में. सर हमारे लिए सीख लीजिए. कहाँ से सीखो बताओ. तुम्हारा टीचर का फोन नंबर दे दो मेरे को तो मैं उनसे ही सीख लूंगी. सर देखो, आप जैसे जैसे पढ़ाओगे ना तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा. अरे बट मुझे आती नहीं है. मैं खुद एग्जाम में छोड़ के गया था तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ. सर आप भी वाई एकेडमी ज्वाइन कर. That's a nice one. अच्छा पहले इस क्वेश्चन में ना फिगर बनाना एंड उसके बाद मुझे बताना जब तुमने फिगर बना लिया. Yes everybody सर फिगर मीट्स बनाना. BC इन D है क्या? वो D है ना? हाँ हाँ डी डी डी. We have to find like the length of AD, right? Yeah. Find BD means that only. Sir, I think for the bisector, I think it also cut BC equally, right? If I'm not wrong. No. That is the case for a median, not a angle bisector. अच्छा let me make the figure and बताना same ही figure बन रहा है क्या. Let's say you have a triangle. All right, like this. A, B, and C. And what do we have is we have an internal bisector meeting BC and D. So it's like this, and this angle will be equal to this angle. Correct? ABC के कुछ coordinates हैं वो तुमने मार्क कर लिए होंगे. So ED की लेंथ निकालनी है. कैसे निकालेंगे? So AD का ना हम्म.
देखो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, वो क्या होती है, BD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AC। क्लास 10th NCERT मिसलेनियस में इसका एक क्वेश्चन था, तुमने ये थ्योरम प्रूव करी है। सर हम लोग ने बोर्ड्स नहीं दिए, हम लोग ने इतनी पढ़ाई नहीं। 10th में। तो बोर्ड्स ने दिए तो पढ़ाई तो करी है ना। No, sir, I stopped studying in January. I knew boards would not happen. वाओ, वेरी नाइस। I wish I could say. ओके सो एक्चुअली अच्छा, ऐसा थ्योरम इज, कुछ था, opposite angles or something like that. Up the sides opposite to the angle are equal or something like that. And then BD upon DC equals to AB upon EC, ऐसा कुछ तो था, हाँ, I think. कुछ तो था ना, बट वो कुछ यही है, ठीक है। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सिमिलैरिटी में पढ़ी थी, तो अब किसी जूनियर से पूछने जाओगे तो कैसा लगेगा तुमको कि बताना जरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। सर हम इंटर्न उनसे ट्रिको का क्वेश्चन पूछ लेंगे, बात बराबर हो जाएगी। पहले फ्लेक्स करोगे और उसके बाद अरे ये मुझे बताना कैसे, तू बता देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है नहीं आती, ऐसा करके ट्राई कर सकते हो यार, ऐसा कुछ। अरे चलो ठीक है। तो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ यू हैव अ एंगल बाइसेक्टर देन इट सेज BD which is like the point on the opposite side जहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। So BD divided by AB is equal to CD divided by AC. So मुझे बताओ BD divided by CD का रेशियो निकाल सकते हो, because you can calculate the length of AB and AC using the distance formula. तो क्विकली कैलकुलेट करो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB और AC का रेशियो। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB एंड AC। सर बहुत थक गए हैं, पूरे दिन से कैलकुलेशन करके आप ही कर दो। देखो AB आएगा 5√2, मत करो कैलकुलेट, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता है ना अप्लाई करना, एंड AC आएगा 3√2, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 5/3, करेक्ट। So BD is to CD का ratio is 5:3. Now using the section formula, can I calculate the coordinate of D? Yes, sir. So as soon as I get the coordinate of D, I have the coordinate of A. So distance formula से वापस AD का length आ जाएगा। Correct. So that is how you do this. So ये statement या तो याद कर लो, because there might be chances कि इस पे based question आ जाए। So this is the angle bisector theorem. And let's say अगर D मीडियन होता तो सीधा 1:1 में डिवाइड होता, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते थे। रूट टू कैंसिल हो गया क्या? रूट टू रूट नहीं कैंसिल थोड़ी हो जाएगा इसमें। रूट टू कैंसिल नहीं हो सकता, कैसे होगा फिर? 5√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिगर आउट करो यार, ये 5/3 कैसे हो सकता है? सर आज कोई चॉकलेट क्वेश्चंस नहीं है? तुम लोग पहले मेरी चॉकलेट्स तो दे दो यार पहले, उसके बाद चॉकलेट क्वेश्चन। अच्छा मेरे पास एक गेम है बहुत इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग खेलते हैं, एंड फिर हम लोग लॉगरिथम्स करेंगे, ठीक है। तो वैसे आपने बोला था सारे चॉकलेट्स माफ, क्योंकि मैंने वो करेक्ट आंसर दिया था वहां पर। वो मैंने कर दिए, बट ठीक है यार। सर तो आप फिर से मांग नहीं सकते ना। तो तुम लोग दे कहाँ रहे थे? नेक्स्ट क्लास से पहले तुमको देनी चाहिए थी ना चॉकलेट। सर आपको लोकेशन कुछ नहीं मालूम, सर हम कैसे थे? बहाने मार लो, पहले पूछ लेते मेरे से लोकेशन कहाँ है मेरी, बता देता तुम्हें। नो एक्सक्यूजेस अलाउड।
ठीक है, any doubts in the 8th question? Yes. So Ramesh? 1 minute. 1. So I said 1 minute. मैं Basically, you rationalized it, right? Into 3 root 2 into 3 root 2. अरे हाँ यार, पहले ये फिगर आउट करो. 5 square root of 2 divided by 3 square root of 2, 5 by 3 कैसे हो गया? मेरे को लग रहा है ये शायद कुछ तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा लग रहा है यार. ये तो डिफिकल्ट है ऋषित, मेरे से तो समझ नहीं आया. मेरे पास आंसर ऑलरेडी था, मैंने सीधा 5 by 3 लिख दिया आंसर. अच्छा ऋषित, ये बताओ 2 by 2 क्या होता है? 1. तो ये 1 कैसे हुआ? टू और 2 है और क्या? 2 और 2 है तो 1 कैसे हो गया? 2 can divide 2 ना. 2 into अच्छा, 1 so is that equal means to 2. 2 ones are 2 and 2 ones are 2, right? 1 1 1 by 1 आ गया आंसर. फिर वापस Yeah. 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फिर वापस 1 1 जा 1 1 जा 1, एंड ये इनफिनिटली चलता ही रहेगा. अरे तो यार स्क्वायर रूट ऑफ 2 times 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 times 1 कैंसिल नहीं हो सकते हैं क्या? तो मैंने बोला था, आपने ना बोल दिया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोला होगा. चलो रूट 2 की टेबल बताओ मेरे को. रूट 2 की टेबल क्या होती है? रूट 2 1 जा रूट 2, रूट 2 2 जा 2 रूट 2, रूट 2 times 3 is 3 रूट 2. एक क्वेश्चन और सॉल्व करें या नहीं करना है? चॉकलेट क्वेश्चन रखना है क्या? यस और नो बताओ बताओ. सर अगर आपको चॉकलेट देने का मन है तो आप रख सकते हो. और नहीं सॉल्व हुआ तो बताओ मेरे को, फिर क्या करोगे? और आप नहीं दोगे चॉकलेट वही. हाँ, मैंने इसलिए तो बोला था आपको देने का मन है तो ही रखो. मतलब तुम लोग नहीं देने वाले हो ना? यार मेजरली भी आर सर आज कवर्ड तो एवरी. वैसे भी शुभ दिन है ना, मैथ सिलेबस खत्म हो रहा है तो आपको वैसे ही पार्टी देनी चाहिए. पार्टी तो बनती है, करेक्ट, ये बात तो सही है. 12th ग्रेड का बाकी है ना, खत्म कहाँ से हुआ? अरे मैं एक तो तुम लोग को पार्टी दिला रहा हूँ, वो भी नहीं चाहिए क्या? ठीक है, अब तो 12th के बाद ही करेंगे. ठीक है. नहीं यार, एक्चुअली पार्टी तो बनती है. तुम लोग सब कहाँ रहते हो बॉम्बे में? एक बार क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं. You sure you want to put that it's recording and that goes on YouTube? Like putting address is not a good idea. करेक्ट करेक्ट. 1 second. मैं कौन सा क्वेश्चन लिखने वाला था? Why is that list out? Locus. Yeah. Find the locus of a point which moves such that don't solve it fully, but बस equation frame कर देना, that's all. And by the way, this is not a chocolate question. It's a very simple question because इसमें tough questions नहीं बनते हैं. 12th grade में you get nice questions because you have plane and aligned.
Do you have that chapter wise weightage? Not for math, we didn't get one. We have it, and this Yeah, counts we for have. only 2 marks for this year. Okay, so most probably the question will be case to 1 वाला, ठीक है? अब सेम क्वेश्चन आया ना तो फिर तो चॉकलेट दे ही देना यार, वही क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में वही क्वेश्चन बनता है. Done, sir. Chocolate देने का, not the question. हाँ, पहले चॉकलेट की वजह खुश मत हो जाना, पहले सही से सॉल्व भी करके आना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना. Everybody look at the equation which I have written. This P is the point जिसका locus हमें निकालना है. Let's say x, y, z. तो इसमें स्क्वायर रूट का टर्म आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर. Sure. No. Why Yes. no? Because you're individually squaring it. All right, ठीक है. So कर लोगे इसके बाद इस क्वेश्चन को, बस इक्वेशन बना के ऐड करना है सब चीजों को. ठीक है. I'll write the final answer in case this is x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 8z minus 1 is equal to 0. ऑल कूल. कोई डाउट है? अब 3D ज्योमेट्री में कोई डाउट है किसी को? कोई चीज नहीं समझ आई है? सब समझ आ गया? ठीक है. सो तो एनसीईआरटी जब में locus of a point Yeah. पूछा है तो हमें सिर्फ इक्वेशन देना है. हाँ, locus is a set of points and set of points जो भी तुम्हारी कंडीशन है वो लगा दो and you will get the required locus. स्क्वायर भी आ सकता है कभी, क्यूब भी आ सकता है. So locus is just a set of points which has some condition on it. Okay, so 3 exercise है and एक miscellaneous है. So जितने भी variety of questions है सारे हमने कर लिए. ठीक है, कुछ नया नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में. ऑलराइट. अब बताओ तुमको इसके बाद क्या पढ़ना है? Write the heading logarithm. I'll give you like थोड़ी बहुत properties will do and questions at least chemistry के तो हो जाएंगे. So log n base b is equal to x. अच्छा, सबसे पहले इसको बोलते कैसे हैं? Log n base b. Log n base b. This b is the base. Now when you say that log n base b is equal to x, what does this mean? It means n is equal to b to the power x.
b की क्या पावर होनी चाहिए so that you get the value of n. So let's say if I give you 4, 2 and x, what will be the value of x? 2. Correct, x will be 2. 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि 4 बन जाए, ठीक है? So it's like 4 is equal to 2 to the power x and then you figure out कि x की क्या value होनी चाहिए, ठीक है? Now there are certain implications, I mean there are certain conditions in order to define a log. So it's like n has to be positive, so हमेशा जो भी number है that has to be positive, base has to be greater than 0 and base should not be equal to 1. So quickly tell me why base should not be equal to 1. So if I say, let's say, So because 1 to the power x is 1 only. exactly 1 to any power is 1 itself. So कोई भी दूसरा number तो कभी define होगा ही नहीं, right? So this is how it works. कि base should not be equal to 1, base should be greater than 0 and n should be greater than 0. Okay. The next thing is, there are two logs which we use most frequently. So one log is with the base 10. Let's say you have log n base 10. So this is known as common log. This is common log, and log n to the base e or ln n. This is natural log. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली वी टेक दैट टू बी अ नेचुरल लॉग. अगर क्वेश्चन में बेस 10 गिवन है तो ऑफ कोर्स यू विल टेक द बेस एज 10. So what is the other thing for a natural log? ln, ln. Okay, now after this write some properties. So the first property is if you have log base b m into n. So you can separate this log and you can write this as log m base b plus log n base b. The second property is log b m by n. So it's like log b log m base b minus log n base b. The third property is log b m to the power n is same as n log b. अच्छा, what will be log n, like log n base n? इसका वैल्यू क्या होगा? n log n. नहीं, just figure out कि n की क्या पावर होनी चाहिए कि so that you get n. 1 x to the 1. power. Exactly. So x की value 1 होनी चाहिए. So log n base n is equal to 1. Okay. The next question is, what is log 1 base n? So can you explain the fourth part again? Like what is it to the base of? Base of n. जो भी the number which is over here, that's the same thing present in the base. Understood, sir. Okay, so what is log 1 base n? 0. Correct. N to the power 0 will be equal to 1. All right, great. चलो एक बार मैं explain कर देता हूँ कि ये properties कैसे work करती हैं. So let's say you have to calculate log base 10 6, ठीक है, and तुमको values given है log base 10 2 and log 3 base 10, ठीक है, and you have to calculate the value of log 6. So can I write log 6 as 2 into 3 and the base is 10? Can I do this? उसके बाद मैं ये property apply करूंगा कि I can separate the log for the individual numbers.
I can write this as log 2 base 10 plus log 3 base 10. समझ आया? Sir, I have a doubt. Yeah. So 2 and 3 are like in power या फिर normal? They're not in power. That's the value of n. जहाँ पे n place कर रहे थे okay. वहाँ पे. So it's not raised to anything, right? Right. Achha, now let's say if you are given the value of log 5, okay, and you have to calculate log base 10 5 by 2. So ये कैसे calculate करोगे? You'll use this property. It'll be log 5 base 10 minus log 2 base 10. Okay, you'll have the values of 5 and 2. Log 5 base 10 minus matlab you'll have this value and this value, you'll have to just substitute that. Okay. After this, let's say अगर तुमको log 10 log 4 base 10 की value निकालनी है and you are given the value of log 2 base 10. How will you calculate this? देखो, we can write 4 as 2 का whole square या 2 का square. Yes, sir. Correct. So using property 3, m to the power n, तो जो power होती है वो आगे आ जाती है log के. So it'll be 2 times log 2 base 10. समझ आया? So अगर केवल log 2 गिवन है तो तुम इससे 4 निकाल सकते हो, 8 निकाल सकते हो, जो भी 2 की पावर्स पॉसिबल है वो सब कुछ निकल सकती है, केवल अगर तुम्हें log 2 base 10 दे दिया जाए तो. करेक्ट? कोई डाउट है किसी भी प्रॉपर्टी में? No, sir. No, sir. So एक और प्रॉपर्टी लिख लो. So the next property is log base b n can be written as log n base. You can change the base. ठीक है? Log b base n base k, sorry. So log n base b को तुम लिख सकते हो log n base k divided by log b base k. ठीक है, तो अब ये कैसे वर्क करेगा? लेट्स से अगर तुम्हें log 5 base 2 की वैल्यू निकालनी है, तो what I can do is I can write this as log 5 to the base 2. I am keeping the value of k as 2. अब समझ आएगा k को मैंने 2 क्यों रखा. Let's say if I put like denominator में क्या हो जाएगा, b to the base 2, and मुझे पता है ये वैल्यू 1 होती है, right? But of course we'll reach the same term again. तो the point is कि you can change. अच्छा रुको, एक और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट्स से तुमको log 5 base 2 निकालना है एंड तुमको जो वैल्यूज गिवन है दैट आर log 5 base 10 एंड log 2 base 10. इन दोनों की वैल्यूज तुम्हें पता है एंड तुम्हें log 5 base 2 निकालना है. So I can write this log as log 5 base 10 and log 2 base 10. Okay. So क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज पता है तो तुम log 5 base 2 निकाल पाओगे इजीली. But sir, how can you get log 2 like log 5 base 2 as log 5 base 10 by log 2 base 10? How do you get That that? is what we did ना. यही तो प्रॉपर्टी है 6th वाले की. You can change the base. That's all. I mean chemistry के लिए it's enough. तो इन properties से you can figure out how to solve a log वाला question.
ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो, अगर let's say if I give you the value log 10 log 2 base 10 is equal to let's say 0.3, can you tell me what will be the value of log 8 base 10? So another thing, Yeah. like all the stuff is there in chemistry, but there was like 3 more things that were like there. One was there was something to do with the number 2.303, Okay. and like the value, I think log to the base 10 is equal to 1. I'm not sure. Okay, I'll tell you about it after that. Anything else? No, I don't think so. I think that was it. Okay. So quickly tell me log 10 base log 8 base 10 की value क्या आएगी? And I'll tell you that how are those things related. Okay, correct. Smera correct. And yeah, one second. Okay. Zero. Okay, Smera incorrect, Ritu correct. My bad. Yeah, sir, I was about to change my answer, but then you said correct and I got confused again. Mm. Give me a second. I'm just figuring out कि वो relation में कहाँ 2.03 multiply करना था. So I think it's converting log to the base e to natural Yeah, logs. that's converting, but I'm just like looking at what the value was, like exact value क्या था उसका. It's that the base change theorem वाला piece. Okay. So it's like changing the natural log to common log. So basically तुम इसको क्या कर सकते हो? You can write, let's say if you have log n base e, you can write this as 2.303 into log n base 10. अब तुम पूछोगे सर ये आया कैसे? सो बताओ कैसे आ सकता है ये? देखो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, दैट इज log 10 log e base 10. It's like this. Let me check the relation once more. I'm not really sure कि यही था क्या, कि 2.303 इस साइड ही मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है.
So can you also simultaneously give the answer for the last question which you asked? That's 0.9. 3 into 0.03, 0.3, which is 0.9. Okay, and give me 1 second. I'm just checking that. Okay. Yeah. Okay. So see, you can write this as log n base 10 divided by log e base 10, correct? Using that base change theorem. Can you do that? So 1 divided by log 10, log e base 10 into log n base 10. ये कर सकते हैं. I'm using this property number 6. ठीक है. एंड इसका वैल्यू सॉल्व होके आ जाता है 2.303. एक बार वैल्यू क्रॉस चेक कर लेना. सो आई एम बिकॉज मुझे अभी भी फाइनल आंसर नहीं मिला था कहीं पे भी. सो इट्स 2.303 into log n base 10. ठीक है. लॉजिक समझ आया? I'll cross check this value and yeah, we'll put it on the group कि कौन सा final answer है. ठीक है. Sir, also could you do the last one? देखो, you can write this as log 10. 8 can be written as 2 to the power 3, like log 2 to the power 3 base 10. अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर पावर होती है तो पावर comes out of the log, right? So it becomes 3 log 2 base 10. So this is equal to 3 times log 2 base 10 is 0.3. So this is 0.3 and this becomes 0.9. Okay, sir, got it. I was actually taking it as like 2 to the bracket 4. I thought we multiplied 4 to the 8 like that. So that is why I was getting it wrong. Okay. एक बार एक क्वेश्चन ये और ट्राई कर लो. log root 2 base 10 and that will be the final question for the class. And also guys, ये relation तुमको याद करना पड़ेगा. Like how do you convert a natural log into a common log? ठीक है. This is very important. And ये chemistry में आता होगा. Generally आ जाता है. So what was the final question? Log square root 2 base 10. And log 2 base 10 is 0.3. Quickly guys. Will it be 0.3 divided by 2? Because power half is, so half comes out of it, and log 2 base 10 is 0.3, 0.3 by 2. Correct. ठीक है. All right. Try करना So can you maximum show question. that conversion formula again? This formula. Yeah, 1 second. I'll just note it. I still have to check this because मैंने अभी try किया. I didn't get the final answer, but I think 2.303 हो सकता है. I don't remember it. Done, sir. All right, guys. Let's stop here I then. think it's upon 2. I think it's upon like 2.303. Upon 2.303.
Sure? Did you check it? Yeah, it says ln x is equal to 2.303 log x. Ln x is equal to, sorry, 2.303 log x. I think the first website may be wrong though. Wait, I'll just check a few more.